one thing that I want from you in the comment section today is whatever the root I shared, I want you to share another word that I haven't shared with you in this video. Hello friends, and how are you doing today? Today's video is about vocabulary. We're going to learn vocabulary in a very practical manner. As said, I will hardly teach you 5 to 7 words, but you will actually learn hundreds of words, or I would say dozens of words with these very few words. Because in today's video, I'm going to introduce you to few of the English roots. Once you see these roots, you'll be super sure that this is what exactly would be or close by the meaning of the word. Let's start today's video, but before I start, I request you to please subscribe my channel, help me to grow more. Press the bell button to get the notifications of my newly uploaded video. आज के इस वीडियो में जो हम कुछ वर्ड्स करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहला रूट जो है that is counter. Counter is something that you have seen over and over, but do you exactly remember or know the meaning of counter? Counter is opposite to something. So as soon as you see word counter in any word, no matter आपके लिए वो word नया है या पुराना है, उसका मीनिंग काफ़ी हद तक सेम ही रहेगा. काउंटरफेट हम करेंसी के साथ यूज़ करते हैं, मतलब नकली करेंसी के लिए, अगेंस्ट अपोजिट टू द रियल वन. काउंटर आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट करता है, आप अपना कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, दैट योर आर्ग्यूमेंट इज काउंटर argument. Counter attack, counter productive. Similarly, there are so many other words and the list is endless. So as soon as you see such words that are with the counter, even counteract, then even बहुत ही commonly use होने वाला हमारा writing task में, task 1 में especially counterparts, मतलब अगर हम oppositions की बात करें, counterparts हम use करते हैं. So this one word is going to help you and understand many different words. Another one is FORE, for. कहीं पर भी for लिखा हुआ है तो for means ahead, at the front. So for से भी कितने सारे words आपको पता है. For example, forehead. आप पंजाबी सब तो पहला किसी मत्थे लगते हैं, right? So forehead. Forefathers, मतलब जो पहले आए हमारे से, forefathers. Forecast करना, किसी चीज को predict करना. Foreknowledge, and there are so many other words. So just remember this one word and it would help you in learning many new English words. Another one is in front of me is hyper. Hyper is superactive or overactive. Then there are many words like this. Hypertension, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपर हो जाता है. हाइपर सेंसिटिव, ऐसे कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, एंड मैनी अदर. नेक्स्ट वन वर्ड इज mal, MAL. Actually, it is a French word. Mal means something not doing well, something wrong. For example, como ça va? अगर आप सही हैं तो फ्रेंच में आप कहते हैं just oui bien, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हैं तो कहते हैं just oui mal. That means mal is a negative word. Malnutrition, malfunctioning, और ऐसे कई सारे words आपने सुन रखे होंगे. So as soon as you see the word mal, malpractice, and that would means something wrong. Malpractice, wrong practice. Another word is mono. Mono means one, single. Are you a multilingual? No, I'm a monolingual. That means मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलता हूँ या मुझे एक ही लैंग्वेज आती है. Monolingual. Monologue, जैसे हम IELTS के लिसनिंग करते हैं. सेक्शन 1 डायलॉग होता है, दो बंदे आपस में बात करते हैं, लेकिन सेक्शन 2 यूजुअली या सेक्शन 4 मोनोलॉग होता है, एक स्पीकर लगातार बोलता है. सो मोनोक्रोम, राइट. एंड another one is monogamy, monotone, एक ही टोन में बात करते रहना, right? So all these are the same, having the same sense. Remember, if you know the meaning of the mono, if it is a root, you can figure out the meanings of many other words.
The another word that I have with me to share with you is sub. Sub is under. सबमरीन सबसे इजी है याद रखने के लिए. पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है. सबवे सबवे वो वाला नहीं जहाँ पर आप जाके बर्गर्स वगैरह खाते हैं या सैंडविचेस खाते हैं. सबवे रास्ता जो अंडर द वे होता है. जैसे दिल्ली में आप जाइए, सड़क ऊपर से पार करनी बहुत मुश्किल होती है, ट्रैफिक ही इतना है जिसकी वजह वहाँ पर जगह जगह पर सबवेज बने हुए हैं. राइट. सो सबमरीन, सबवे, सबॉर्डिनेट एंड इवन सबस्टैंडर्ड. कितना सिंपल सा वर्ड है. ये चीज़ किस क्वालिटी की है? अच्छी क्वालिटी की है तो हम कह देते हैं इट्स अ गुड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी. पोर क्वालिटी है, घटिया है, कॉपिड है तो हम कह देते हैं सब स्टैंडर्ड है. नेक्स्ट वर्ड दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज टेले. टेले टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्यूटिंग, टेलीविजन, टेलीग्राफी, टेलीग्राम एंड इवन टेलीकास्ट. ये बहुत सारे वर्ड्स हैं. मतलब फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से. टेलीफोन भी करते हैं, करते यहाँ पर हैं, आवाज़ कहीं और सुनती है. टेलीकास्ट भी हो रहा है, हैपनिंग कहीं और की है, नज़र कहीं और आती है. सो टेले इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टेलीकम्यूटिंग जो मैंने अभी कहा ये आइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ज़रूर सर्च कीजिएगा. टेलीकम्यूटिंग एग्जाम से पहले प्रिपेयर जरूर कर लेना. एंड द लास्ट वन दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज ट्रांस. ट्रांस इज ट्रांसमिशन, मूवमेंट को जस्टिफाई करता है. ट्रांसफॉर्म किसी और शेप में आ जाना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसलेट करना. ये सारे वर्ड्स ट्रांस एज अ रूट से बने हुए हैं. सो व्हाट यू लर्न टुडे इज you learn the important roots, and there are hundreds of roots like this. It helps you in saving your time and energy to learn vocabulary. That means आपको hundreds of अलग-अलग words याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा सा फोकस roots पर करना शुरू कर दें तो आप exactly नहीं, एटलीस्ट एक काफ़ी क्लोज बाय आइडिया या गेस कर सकते हैं कि जो नया वर्ड आपको नज़र आ रहा है, जो रीडिंग में आ सकता है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम द रूट्स, बी सुपर श्योर अबाउट ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन इंग्लिश वर्ड्स. अगर आपको वो चीज़ भी पता है देन नथिंग कैन स्टॉप यू. क्योंकि हम हर एक इंग्लिश का वर्ड नहीं याद रख सकते, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स को समझ पाएँ या एक क्लोज गेस एटलीस्ट जरूर कर पाएँ. दिस इज प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लर्नड a new way of learning vocabulary. If you like the video, please give it a thumbs up. So one thing that I want from you in the comment section today is whatever the root I shared, I want you to share another word that I haven't shared with you in this video. So I will be waiting for your comments. Thanks for watching today's video.